Hello guys, welcome to BIOGURU, to your own channel. So now we will discuss about inheritance of two genes. देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके लॉस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डाइहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बिकॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर ही दिया गया था। सो द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स और डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? A cross made between two parents differ in two contrasting characters is called dihybrid cross. Monohybrid cross में हमने single character के लिए contrasting traits लिए थे. Now in dihybrid cross we will take two contrasting traits for each of the gene. तो यहाँ पे दो जीन हैं और 4 contrasting traits होंगे and 2 characters होंगे. So Mendel conducted other experiments in which he followed the inheritance of two different characters. तो दो अलग अलग characters लिए, दो अलग अलग characters हैं और 4 traits हैं. A dihybrid cross. So in one dihybrid cross experiment, Mendel studied the inheritance of seed color and seed shape. तो दो main characters कौन कौन से लिए उन्होंने? Seed color and seed shape. तो color and shape, there are 2 different characters. The alleles for yellow color is capital Y, is dominant, and the allele for green seeds is a small y, it is recessive. And the allele for round seeds, capital R, is dominant, and the allele for wrinkled seeds, small r, is recessive. Then Mendel crossed true breeding plant that had round yellow seeds, capital R, capital R, capital Y, with the true breeding plant that had wrinkled green seeds, small r, small y, small y. तो यहाँ पे जो 4 हमने एलीज लिए हैं, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y. So 4 एलीज and 2 characters. अब इन्हें क्रॉस कराया गया कि राउंड येलो सीड्स आर क्रॉस्ड विद द रिंकल्ड ग्रीन सीड्स. पेरेंटल जनरेशन थी. जब क्रॉस कराएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैमीट्स की बात करेंगे. तो कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y से जो गैमीट्स आएंगे, कैपिटल R, कैपिटल Y. स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y के जो गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे स्मॉल r, स्मॉल y. अब जब इन्हें क्रॉस कराया गया गैमीट्स को, तो हमें जो F1 जनरेशन मिलती है, F1 जनरेशन इज कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y. इट इज F1 जनरेशन. अब इस F1 जनरेशन का आप F2 जनरेशन बनाओगे, मतलब इसको आप क्या कराओगे? सेल्फ क्रॉस कराओगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराओगे. द गैमीट्स कैपिटल R, कैपिटल Y and small r, small y unite on fertilization to produce the F1 hybrid capital R, small r, capital Y, small y. अब आपने क्या किया कि अब जब आप F2 बनाते हो तो आपको अलग अलग टाइप के सीड्स मिलेंगे. अब देखिए यहाँ पे हमने जो अलग अलग हमारे पास गैमीट्स थे आपने लिए हैं. देयर आर 4 types of gametes, 4 possible gametes. Capital R, capital Y, then capital R, small r, capital Y, and small r, small y. अब इनको हमने जब क्रॉस कराया, अगेन कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, एंड स्मॉल r, स्मॉल. अब यहाँ इसके जब हम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, तो फिनोटिपिक रेशियो आता है 9:3:3:1. So phenotypic ratio is 9:3:3:1, and genotypic ratio is 1:2:2:4:1:2:1. तो phenotypic ratio और genotypic ratio, phenotypic ratio डिपेंड करता है किस पर? आपके phenotypic expression पर, जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो, बट जीनोटाइप को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते. अब देखिए जो 1:2:2:1:1:2:1 जो है यहाँ पर, वो कैसे है? देखिए जो 1 आपके पास है, फर्स्ट जो हम 1 की बात करेंगे, इट इज कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y. देन नेक्स्ट 2, इट इज कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y. ये कितने हैं? 2. कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y. और कोई है? नो. सो 2. Then next आता है 2, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, 1, and कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, ये भी 2 आ गए. तो ये भी 2 रेशियो में आ गया. देन आता है 4, so कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, 1, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, 2,
capital R small r capital Y small y 3, capital R small r capital Y small y 4. तो 4 आ गया. Then capital R small y क्या और कोई है यहाँ पे? नहीं. तो रेशियो 1. Then capital R small y 1, capital R small y 2. So it is 2. Again, small r capital Y only 1. So it is 1. Then small r capital Y small y 1 and small r capital Y small y 2. So it is 2. Then small r small y it is only 1. So genotypic ratio is 1 ratio 2 ratio 2 ratio 4 ratio 1 ratio 2 ratio. पढ़ा आपने रेशियो, तो ये अभी आपने पता कि कैसे आया, ये भी आपको क्लियर हो गया. So when Mendel self-pollinated the F1 plants, he found that 3/4 of F2 plants had yellow seeds and 1/4 had green. The yellow and green color segregated in 3:1. Then round and wrinkled seed shapes also segregated in a 3:1 ratio, just like in a monohybrid cross. तो अब इनके बेसिस पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया गया. In the dihybrid cross, the phenotypes round yellow, wrinkled yellow, round green and wrinkled green appeared in the ratio 9:3:3:1. तो रेशियो क्या आ गया हमारा? 9:3:3:1. So it is the ratio. ये phenotypic ratio था. And the ratio of 9:3:3:1 can be derived as a combination series 3 yellow, 1 green with 3 round and 1 wrinkle. This derivation can be written as follows: 3 round, 1 wrinkle, 3 yellow, 1 green is equal to 9 round and yellow, 3 wrinkled yellow, 3 round green, 1 wrinkled green. तो रेशियो आपका 9:3:3:1 आया था. In other words, the probability of round yellow is 3/4 9 ratio या 9/6, आप उसे 9/16 कह सकते हैं. Then 9/16 3/16 3/16. Okay. तो अब in other words the probability, तो round yellow, wrinkled yellow, round green and green wrinkle, ये हमारे पास ratios आते हैं सेम. ये हमने जो dihybrid cross कराया था उसका रिजल्ट सेम as already discussed. So based on dihybrid crosses, Mendel proposed a second set of generalization that we call Mendel's law of independent assortment. The law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of character. दोनों जीन एक दूसरे के एक्सप्रेशन को मॉडिफाई नहीं करते, इंटरफियर नहीं करते उनके एक्सप्रेशन में, सो इंडिपेंडेंट है. दे आर नॉट डिपेंडेंट टू ईच अदर. द पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द टू पेयर्स ऑफ जीन्स. सो फॉर एग्जांपल, द जीनोटाइप of the F1 plant, which is double heterozygote, capital R small r capital Y small y. Consider the segregation of one pair of gene, capital R and small r. So 50% of the gametes have the gene capital R and the 50% have small r. Now अब देखिए जो अलग अलग पॉइंट्स आए थे. So now besides each gamete having either capital R or small r, it should also have the allele capital Y or small y. So again 50-50% चांसेस है हमारे कि अगर मान लीजिए कैपिटल Y स्मॉल y है तो 50-50% चांसेस है गैमीट्स में या तो कैपिटल Y आएगा या स्मॉल y आएगा. So 50% of the R bearing gamete has capital Y and the other 50% has small y. Thus there are 4 genotypes of gametes, 4 types of pollen and 4 types of eggs. The 4 types are capital R capital Y, capital R small r capital Y and small r small y. Actually it is small y, थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, it is small y. So each with a frequency of 25% or 1/4 of the total gamete produced. चलिए आगे आते हैं. So now some MCQs. Cross between two parents which differs in 2 contrasting characters is called monohybrid cross, dihybrid cross, back cross or test cross. Yes, it is dihybrid
cross. In dihybrid cross, Mendel studied the inheritance of seed size, flower color, then seed shape and seed color, flower shape. Yes, it is seed shape and seed color. The allele for yellow color, capital Y, is dominant on allele for red seed, allele for yellow seed, allele for green seed, or allele for round seed. It is allele for green seed. That's good. In the dihybrid cross, the phenotypic ratio is 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1, 3 ratio 1, 1 ratio 3, or 9 ratio 3 ratio 6 ratio 1. It is first 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1. The Punnett square is effectively used to understand the law of dominance, law of segregation, law of independent assortment, or independent segregation of two pairs of genes. Yes, it is independent segregation of two pairs of genes. Now, अब आती है क्रोमोसोमल थ्योरी. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. देखिए, मैंडल ने जो थ्योरीज दी थी और मैंडल ने अपना जो वर्क पब्लिश किया था वो काफी टाइम तक लोगों को नहीं पता था या लाइट में नहीं आया था. So Mendel published his work on inheritance of characters in 1865, but it remained unrecognized till 1900. Because of the following reasons. सोचिए अब 35 years, 65 से 1900, 35 years तक उनके वर्क को किसी ने पहचाना ही नहीं. अब इसके रीजंस क्या थे? फर्स्टली, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी. इतना इजी कम्युनिकेशन नहीं था. आज क्या है, आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. मीडिया है, बहुत सारे हमारे क्या है वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने रिसर्च पेपर्स को पब्लिश कर सकते हैं. बट उस टाइम पर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी in those days, and his work could not be widely published. Second, his concept of genes or factors as stable and discrete units that control the expression of traits and of the pair of alleles which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries. अब उनका जो फैक्टर उन्होंने बोला था, जीन्स को फैक्टर कहा था, तो वो फिजिकली प्रूव नहीं कर सकते थे कि फैक्टर्स होते क्या है. Thirdly, Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena. अब बायोलॉजिकल फिनोमेना के लिए मैथमेटिक्स यूज करेंगे तो भाई बायोलॉजी वाले तो नाराज हो ही जाएंगे. तो वो चीज भी थी कि उनके बहुत सारे दुश्मन भी क्रिएट हो गए थे और लोग नहीं समझ पा रहे थे कि मैथ्स को और बायो में जो उन्होंने कंबाइन किया, तो बहुत सारे लोग थे जो उस फिनोमेना को नहीं समझ पा रहे थे. सो इट वॉज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम. In 1900, three scientists, De Vries, Correns, and von Schirmeck, independently rediscovered Mendel's results on the inheritance of characters. So, advancement in microscopy, अब अच्छे microscopes आ गए थे, enabled the scientists to observe cell division. अब वो easily cell division को देख पाते थे, cells के अंदर nucleus को देख पा रहे थे. So, this led to discovery of the structure in the nucleus that appeared to double and divide just before each cell division. तो साइंटिस्ट ने देखा कि हर सेल डिवीजन से पहले जो न्यूक्लियस है वो डबल होता है, और जब न्यूक्लियस डबल होगा और अपने कैरेक्टर्स को वो डबल करेंगे, लेकिन वहां कैरेक्टर्स हाफ तो नहीं होते, क्योंकि जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसमें क्या था, न्यूक्लियर कंटेंट भी डिवाइड होता है या डबल होता है. सो गिव द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर्ड मेंडल्स लॉ. तो ह्यूगो डे व्रिस, कोरेंस एंड वॉन शर्मैक. So these structures were called chromosomes. जब साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को देखा, न्यूक्लियस में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स देखे, उनको उन्होंने नेम दिया क्रोमोसोम्स. Then by 1902 the chromosome movement during meiosis had been worked out. अब इजीली उन मूवमेंट को सब लोग देख पा रहे थे. ये पॉसिबल था कि हम क्रोमोसोम्स के मूवमेंट को, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते थे. So chromosomal behavior during meiosis with 4 chromosome. जैसे मान लीजिए एक पेयर था, डबल हुआ, फिर डिवाइड हुआ, जर्म सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाती है, और जब जर्म सेल्स फ्यूज करते हैं जाइगोट में, वो उसे रिकवर कर लेते हैं. सो नाउ Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used to chromosome movement to explain Mendel's law. तो उन्होंने देखा जो क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, उनका सेम बिहेवियर है जो मेंडल ने बोला था. उनकी जो बातें थी मेंडल की, कहीं ना कहीं सही थी. The chromosomes as well as genes occur in pairs. दोनों ही हमेशा पेयर में होंगे. The two alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosomes. Now,
A comparison between the behavior of chromosome and the genes occurs in occurs in pairs. Then segregate at a time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete. Segregate at gamete formation had and only one of each pair is transmitted to a gamete. Then independent pairs segregate independently of each other. One pair segregates independently of another pair. Can you tell which of these column A or B represents the chromosome and which represent the gene? How do you decide? Both A and B columns represented chromosome and the genes as characters are seen. Now, so during मेटाफेज आप जब मियोसिस पढ़ते हैं, माइटोसिस पढ़ते हैं, सेल डिवीजन पढ़ते हैं, so यहाँ मियोसिस फर्स्ट है. So during metaphase of meiosis first, the two chromosomes pair can align at the metaphase plate independently of each other. To understand this, compare the chromosomes of four different colors in the left and right column. In the left column, possibility 1, orange and green is segregating together. So, but in the right hand column, possibility 2, अब आपके मन में आ रहा है डायग्राम तो है नहीं, आएगा आगे आएगा, वेट करो. The orange chromosome is segregating with the red chromosome. So, it is a diagram. So independent assortment of chromosomes. तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कि one long orange and short green chromosome and long yellow and short red chromosome at the same pole. ये orange and green, yellow and red. अब क्या हुआ, इनका ट्रांसफर होगा और जर्म सेल्स में सिंगल ट्रांसफर होंगे. तो ये ही हमारी जो क्रोमोसोम थ्योरी, एलील थ्योरी जो किसने दी थी, मेंडल ने दी थी, उसको सपोर्ट करती है. सटर्न एंड बोवेरी argued that the pairing and segregation or separation of a pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factors they carry. Sutton combined the knowledge of chromosomal segregation with the Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance. Sutton and Boveri. So now some MCQs. What is phenotype of capital T, small t, capital R, small r? It is heterozygous tall, heterozygous round. Who proposed the chromosomal theory of inheritance? Gregor John Mendel, Sutton and Boveri, Anton van Leeuwenhoek or Morgan. It is Sutton and Boveri. Thank you.